Hi, do you also want your Instagram feed look like you just opened Pinterest? Do you also want to know how I have turned this picture into this? Then this video is just for you. Welcome back to my channel and welcome to another editing tutorial video. I don't even remember when did I last make a video on this topic. Self-portrait वाली video भी मैंने कब बनाई थी last मुझे याद नहीं है. I did not get the time to click my pictures, click self-portraits basically. हाँ, thumbnail वगैरह या तो फिर ऐसे छोटे मोटे shoots वगैरह के लिए मैं अपनी picture click करती रहती हूँ. But it's not like a proper self-portrait shoot. I was planning on to make a video on self-portrait ideas. Probably this month I will be making the video. अभी तो 80% sure हूँ कि करनी है. Let's see, let's hope for the best. I thought self-portrait का video अभी ना सही, editing tutorial का video तो मैं बना ही सकती हूँ अभी, because मुझे ऐसे बहुत request मिलती है कि editing tutorial का video भी बना दो. So here I am making this video. Okay, so the first thing you need if you want to make your Instagram feed look like Pinterest is click good pictures. And good pictures मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको DSLR से क्लिक करनी है या तो फिर iPhone से क्लिक करनी है. आई एम जस्ट सेइंग ट्राई टू क्लिक एस्थेटिक पिक्चर्स एंड फॉर पिक्चर इंस्पिरेशन यू कैन चेक आउट माई Instagram feed और यू कैन चेक आउट माई सेल्फ पोर्ट्रेट वीडियोज़. और सबसे आसान चीज़ मैं बता देती हूँ, आप Pinterest पे जाओ, सर्च करो कुछ एस्थेटिक पिक्चर्स या पोस्ट आइडियाज, यू विल गेट टन्स ऑफ पिक्चर्स. There you go. पिक्चर्स क्लिक करने के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडिटिंग, क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुकी है कि सपोज आई क्लिक सम पिक्चर्स एंड आई डिड नॉट लाइक द रिजल्ट एट ऑल. लाइक पिक्चर की जो वाइब चाहिए थी वो नहीं आ रही है या तो फिर मतलब इनकम्प्लीट सा लग रहा है. बट एडिटिंग चेंजेस द होल गेम. इफ यू आर प्रो एट एडिटिंग ना, क्या ही बताऊँ. सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि हाउ टू एडिट योर पिक्चर्स लाइक Pinterest. तो अभी मैं बक कम करती हूँ एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दैट. सो फर्स्ट install the app Lightroom. This is the logo. I will include a picture right here. Lightroom पे ना ऐसे बहुत सारी professional editing features है that can make your content creator वाला life so much easier to be honest. So मैं mostly pictures Lightroom पे ही edit करती हूँ. ये मैंने बहुत बार अपनी videos में बताई है. And मेरा कोई paid version नहीं है, मैं free version ही use करती हूँ. इसका pro version भी है of course. Anyway, so first I'm gonna edit this picture. मैं यहाँ पे screen recording डाल देती हूँ and मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाती हूँ. कभी कभार आई ऑल्सो यूज पिक्सार्ट टू एडिट माई पिक्चर्स, बट मोस्टली मैं लाइटरूम ही यूज़ करती हूँ. मतलब लाइटरूम इज़ लाइक कॉमन फॉर एवरी पिक्चर एंड पिक्सार्ट इज़ लाइक रेयर केस. देख सकते हो ये पिक्चर जो है थोड़ा सा ऐसे डार्क है एंड Pinterest वाली पिक्चर्स में क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट ऐसे कलरफुल बट नॉट टू कलरफुल, ऐसी टाइप की वाइब आती है. सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर. सो द फर्स्ट टैब आई ओपन इज द लाइट टैब एंड यहाँ पे द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपोजर. सपोज आपका जो पिक्चर है थोड़ा सा डार्किश है, यू वांट bring light to the picture, you can increase the exposure, and suppose your picture is too much exposed, then you can decrease the exposure. So here I'm gonna increase the exposure a little because of course it's looking very dark हो गया. The next step is contrast. मैंने जो कहा कि Pinterest की पिक्चर में ना थोड़ी सी ऐसी सॉफ्ट सी वाइब आती है एंड कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है, पिक्चर्स ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाती है. कॉन्ट्रास्टिंग का हिंदी तो मुझे पता नहीं है, how to make you understand. Let me show you guys what it happens. This is what happens if you increase the contrast and this is what happens if you decrease it. So you can clearly see the changes, right? तो मैं contrast को decrease कर रही हूँ वो soft vibe लाने के लिए. Next thing is highlight. Now I decrease highlight for each and every picture. This is mandatory because highlight decrease करने से ना जो actual colors है pictures की वो ज़्यादा exposed नहीं रहती है and it brings out the actual color tone, if that makes any sense. Now next option is shadows. Shadows को I always increase क्योंकि decrease करने से पिक्चर ज़्यादा ब्लैकिश हो जाती है ऑफ कोर्स. नेक्स्ट ऑप्शन इज वाइट. वाइट डिक्रीज करने से ना पिक्चर में जो वाइटिश टोन रहती है, जो एक्सपोज्ड टोन रहती है वो डिक्रीज हो जाती है. दैट्स व्हाट वी नीड. एंड ब्लैक्स वर्क्स एज शैडोज. ब्लैक्स को मैं ऑलवेज इंक्रीज करती हूँ तो जो ब्लैकिश टोन है, जो अंधेरा रहता है ना पिक्चर में, वो कम हो जाता है. आई एम डन विद द लाइट टैब हियर. द नेक्स्ट टैब इज कॉल्ड कलर. सो दिस इज आवर गेम चेंजर. द फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर आई ऑलवेज इंक्रीज अ बिट. वो वार्मथ वाइब आती है जो Pinterest की पिक्चर में होती है बेसिकली. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज टिंट. टिंट को आप इंक्रीज करोगे तो इट विल मेक योर पिक्चर लुक पिंकिश एंड इफ यू डिक्रीज द टिंट देन इट विल मेक द पिक्चर ग्रीनिश. नाउ Pinterest पिक्चर्स में आई डोंट नो यू हैव नोटिस्ड और नॉट बट दोज पिक्चर्स हैव अ ग्रीनिश टिंट. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो आई एम गोना decrease the tint, मतलब I will make it more greenish, like little bit, very little amount of it. And vibrant saturation का काम होता है कि कलर टोन को ज़्यादा vibrant बना देती है.
So of course I'm gonna increase the vibrance and the saturation, but do not make your pictures oversaturated, वो बिल्कुल भी pleasing नहीं रखती है. Then I go to this option called grading. So here I go to the highlight option. From here you can change the highlight color, you can change the hue, you can change the saturation. So what I do is change the hue of the highlights, pinkish bluish kind of color, and I'm gonna also increase the saturation. तो इससे क्या होता है ना, जो greenish tint मैंने लाई थी वो इसके साथ balanced हो जाती है, तो it does not look too greenish. The next option I go to is a color mix option. If you use Lightroom you know what happens from here, but if you don't then let me tell you, यहाँ से you can change each and every color's hue, saturation and luminance. Okay, let me explain. So first I'm going to this green color, क्योंकि इस पिक्चर में ज़्यादा green है, so you will get me well. Hue आप increase या decrease करोगे ना, तो जो green color है ना वो increase करने से थोड़ा सा teal blue side चला जाएगा and decrease करने से yellowish साइड पे चला जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एंड सैचुरेशन तो यू नो, इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा, डिक्रीज करोगे तो लो मतलब कम सैचुरेटेड होगा. आई एम गोना डिक्रीज द सैचुरेशन फुल्ली. पिंटरेस्ट पिक्चर्स बहुत ही सटल टाइप के कलर टोन्स होते हैं, उसमें ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं होता है. कलर सैचुरेटेड होते हैं बट इतना मतलब बहुत ही सटल होता है बेसिकली. देन ल्यूमिनेंस. तो ल्यूमिनेंस से यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर कलर मोर डीपर और मोर लाइटर. आई एम डिक्रीजिंग द ल्यूमिनेंस आई गेस. This is looking better. Next color I'm going to is the orange color. So orange color basically defines your skin tone. I think I'm gonna decrease the saturation a bit. As I said, ज़्यादा oversaturated नहीं होता है. And I'm gonna increase the luminance a bit. That's it. Yellow के लिए भी I think I'm gonna decrease the hue to the yellowish side and increasing the saturation a bit and also the luminance. Okay. Red. There is no red basically here except the flowers पीछे थोड़ा बहुत है and my lips. So I'm gonna increase the saturation and the luminance. Then sky color तो यहाँ पे कुछ मैं change नहीं करने वाली हूँ. Then comes blue. Blue basically sky की color होती है, तो I'm just gonna increase the saturation a bit. Magenta and violet तो यहाँ पे है ही नहीं, तो I'm gonna keep it as it is. I'm just gonna take a quick break right here to talk about an issue that more or less we all face nowadays, which is rough, dry and frizzy hair. To deal with this problem, we often use DIYs like curd. However, this is a very time consuming and messy application that requires so much patience, right? So then we tend to use keratin or smoothing shampoos which have toxic chemicals. But now you can get smooth hair naturally with the Mamaearth Curd Smoothing Shampoo and Conditioner. This is how my hair used to look like whenever I come back from an auto ride or a bike ride. Very frizzy, unmanageable. It used to take me so much time to detangle my hair and it was so frustrating. So I finally decided to take the Mamaearth 4-finger hair test challenge. So for that I washed my hair and took a decent amount of the Mamaearth Curd Smoothing Shampoo, massage it gently. So both of the shampoo and the conditioner has ingredients like curd which works as a natural conditioner. It helps combat frizz and makes the hair smooth and shiny. Also they have keratin which strengthens the hair and eliminates frizz, leaving it softer and smoother. After massaging the shampoo well, wash it off with water properly. This shampoo helps to gently cleanse your hair. And then I applied the Mamaearth Curd Smoothing Conditioner from the mid-length of my hair to the tips. Made a bun and secure, kept it as it is for 2 to 3 minutes and then I washed it off properly. It deeply conditions and nourishes the hair. Now according to the 4-finger hair test challenge, I should be able to run my 4 fingers through my wet hair. Let's see if my hair passed this challenge or not. And this was the result, guys. Oh my god, I was literally so stunned as well as I was so happy to see this. Detangling achieved even in wet hair. Now finally we have a non-toxic keratin shampoo and a conditioner with the goodness of curd, so that we are not compromising on the effectiveness of the curd while also saving time. Both of the products are Made Safe certified, makes your hair up to 100% smoother, deeply conditions and nourishes the hair, gives 5 times shinier and softer hair. The usual DIYs only have curd, but there is no keratin that can be used in DIYs. Hence Mamaearth Curd Smoothing Duo with the goodness of curd and keratin. The shampoo and the conditioner both are free from harmful toxins and even the keratin is derived from the plants. Therefore, you can get rid of DIY application but get the same benefits of curd along with keratin. All the Mamaearth products are free from harmful chemicals and they are made of all natural ingredients. Mamaearth is a plastic positive Indian brand. Every time you buy from them, they will link your order on their website to a treat that they planned. By 2025, Mamaearth is aiming
aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. Use my code PAUL2023 to get a 20% discount at their website mamaearth.in and Mamaearth app. Their products are available on Mamaearth, Amazon, Nykaa, Purple, Flipkart and Mamaearth app. Yes, Mamaearth has launched their official app. Users get early access to sales and will get extra discounts. Also guys, now you can buy their products offline too. That's because they are now available in the stores near you. You can DM me or you can comment down below the next time you spot a Mamaearth store near you. All the buying links and the website links are given in my description box down below. And now back to today's video. The next step is effects. So effects में जाके the first thing I do is I decrease the clarity of the picture. As I said again and again that Pinterest pictures ना थोड़ी सी subtle type के होते हैं, थोड़ी सी soft vibe देती है. Clarity decrease करने से जो sharpness है ना picture की, जो detailing है थोड़ा सा कम हो जाता है, तो your picture gives that blurry, not blurry but that soft kind of glow. But बहुत ही कम amount में मैं clarity decrease करूँगी because I don't want to ruin the detailing of the picture of course. And then I also decrease the dehaze. Dehaze increase करने से ये होता है basically picture dark हो जाती है again. तो of course I'm gonna decrease the dehaze. So ऐसे whitish kind of effect आती है. Then I go to the option called vignette and vignette increase करने से the corners of the pictures get whitish and decrease करने से it will get blackish. So of course I'm giving that dreamy kind of effect to my pictures जैसे Pinterest pictures में होते हैं. So of course I'm gonna increase the vignette and then I add a little grain to my picture just to make it more aesthetic. And that's it. This is how the picture was looking before and this is the after. And if you want to save the entire process, editing process and everything, you just have to create your preset. So just tap on the same 3-dot section and go to this option called create presets. Name your preset anything. I'm naming it Pinterest. Just tap on the right option and that's it. Your preset is created. Now you can use this preset on any of your picture. So आपको बार-बार हर picture के लिए अलग से editing नहीं करना होगा. Now let me tell you an important thing right here, which is सब pictures की color tones, lighting and all same नहीं होती है. Of course you know this. So it's not like कि इस particular picture में यही पर्टिकुलर सेटिंग अच्छी लग रही है, दैट मीन्स वही सेम एडिटिंग दूसरे पिक्चर्स में भी अच्छी लगेगी. यू माइट हैव मेक सम चेंजेस ऑन डिफरेंट टू डिफरेंट पिक्चर्स, डिपेंड्स ऑन द कलर टोन्स, लाइटिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट. यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट. सो दैट वाज द बेसिक थिंग यू नीड टू नो अबाउट लाइटरूम, अबाउट द Pinterest इंस्पायर्ड एडिटिंग. बाकी आपको खुद से करनी होगी. सपोज इस पिक्चर के लिए मैंने सैचुरेशन रखी थी 7, राइट, बट व्हाट इफ योर पिक्चर इज ऑलरेडी टू सैचुरेटेड. सो ऑफ कोर्स यू विल नीड टू डिक्रीज द सैचुरेशन, राइट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जैक्टली जो नंबर मैंने यहाँ पे दिखाई है, एग्जैक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट जो मैंने दिखाई है, वो बेसिक चीजें हैं. बाकी आपको खुद से करना होगा आपके पिक्चर्स के लिए. ऑफ कोर्स आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. Don't forget to follow me on Instagram. If you still are not following on Instagram, you are missing out a lot of content, so do follow me there. Subscribe to my channel if you haven't already. Subscribe to my Bengali channel and that's Shiny. I have linked it in my description box. Comment down below if you have any video request or if you want to ask me anything. Share this video and I'll see you guys in my next video. Bye.